Jai Shri Ram. Matru Panchakam, composed by Adi Shankaracharya. I am going to read it out for you. Muktamanitvam nayanam mameti rajeti jiveti chira sutatvam ityukta vatyastava vachi mataha dadamyaham tandulameva shushkam. So Shankaracharya has composed 5 verses honoring all mothers. So Matru Panchakam should be taught in schools. The meaning we will discuss later. The next verse, Ambeti tateti shiveti tasmin prasuti kale yadavocha uchai krishnoti govinda hare mukunda iti jananyai aho rachitoya manjalihi astam tavadiyam प्रसूतिमये दुर्वार शूलव्यधा नैरुच्यं तनि शोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं निष्कृति मुन्नतोपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः. गुरुकुल मुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यति समुचित वेशं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणं योस्ते मातरस्तु प्राणामः न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वधा वा नो दत्ता मरण दिवसे श्राद्धविधिना न जस्त्वां मातस्ते मरणसमये तारक मम रकाले संप्राप्ते मयि कुरु दयां मातुर अतुलाम. Now the meaning is so wonderful. Every child should be taught, and all of us should by heart this. Muktamanistvam nayanam mameti rajeti jiveti chiram sutatvam ityukta vatyastava vachi mataha dadamyaham tandulameva shushkam. Amma, నువ్వు నా ముత్యానివిరా, నా రత్నానివిరా, నా కంటి వెలుగు నాన్న, నువ్వు చిరంజీవిగా ఉండాలి.